Very good morning, children. Welcome to the psychology classroom. I hope you all are fine and everybody is fine at home. I just hope, children, you all are working very hard toward your studies. It is very important for you all as your examinations are over. So, we are studying the chapter 4 human development. So, let's start, children. First of all, I should write down the date. I hope the screen is visible to you and date is also visible. Date आप सभी को दिख रहा है? Okay. Date is visible to you all. So, the date today is 1. So, here we have completed our September month, children, and we are in the October month. Class 11C, subject psychology. I hope the details are very much properly visible to you all. This is 1, 10, 21. Class 11C, subject psychology, and we are discussing the chapter 4, human development. Human development. We are discussing the chapter 4, human development. Children, if you have seen the yesterday video, I had done almost the revision of the chapter up to the things which I had discussed with you. Chapter 4, human development. So today in this video, I try to focus more on this specific topic. So I am going to discuss with you the childhood stage. The earlier in the yesterday video, we are discussing the childhood stage. If I am talking about the childhood stage, in that I had discussed with you the physical development during childhood, the cognitive development during childhood, motor development. So today I am going to discuss with you the socio-emotional development during childhood. So your stage is childhood. And what I am going to discuss, socio-emotional development. What is the socio-emotional development during the childhood? Socio-emotional development. Socio-emotional development. I hope the concepts are very much clear to you and visible. Okay. Okay, children. So we are talking about the socio-emotional development. Socio-emotional development may you get two words, social development and emotional development. So what is the social development criteria during the childhood and the emotional development criteria during the childhood? When we talk about the social development, obviously the child firstly living in the family environment, and when the child grow older, they goes to the school. So obviously the child socialization start. चाइल्ड का जो सोशलाइजेशन है वो स्टार्ट होता है. So child socialization starts. So with the socialization, child social development take place. Similarly, emotional development also take place. Child is able to understand the emotions, that what is the sad when we are angry, when the person is happy. So they start analyzing the emotion. Although they are unable to control and regulate their emotion. Emotions पे control नहीं कर पाते हैं, which is came in them
आफ्टर मे बी द लेट चाइल्डहुड और द एडोलसेंस पीरियड में जब वो जाते हैं, देन दे आर एबल टू रेगुलेट द इमोशन, उससे पहले नहीं हो पाता। सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट की बात हम लोग कर रहे हैं। जस्ट लाइक द कॉग्निटिव डेवलपमेंट, द जीन पियाजे इज द साइकोलॉजिस्ट हु हैज डन द वर्क। सिमिलरली in the socio-emotional development, the person who has worked is Erik Erikson. Erik Erikson is the name of a psychologist and who has given the concept of and worked in the field of socio-emotional development of the child. Erik Erikson. Jean Piaget talked about the 4 stages of cognitive development. Erik Erikson talked about the 8 stages of socio-emotional development during childhood. He has given the 8 stages. So the first stage according to Erik Erikson is trust versus mistrust. Trust versus mistrust. ये आपको समझने की बहुत ज़रूरत है. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट वी आर डिस्कसिंग द सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड. सो जो बच्चा होता है अकॉर्डिंग टू द एरिक एरिक्सन, ये वी आर टॉकिंग अबाउट एज द चाइल्ड टेक बर्थ. जैसे ही बच्चा जन्म लेता है 0 to 2 ईयर इन्फेंसी में होता है, तो वो ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट के स्टेज में होता है. वेयर द चाइल्ड गेट कम्फर्ट, द चाइल्ड डेवलप द फीलिंग ऑफ ट्रस्ट. जहाँ से उसको कंफर्ट नहीं मिलेगा, इट डेवलप द फीलिंग ऑफ मिसट्रस्ट. ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट. सेकेंड स्टेज होता है इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट. तो चाइल्डहुड में एरिक एरिक्सन के अकॉर्डिंग जो बच्चा होता है वो किस सोशियो इमोशनल डेवलपमेंटल स्टेजेस में होता है, एंड दैट वाज इनिशिएटिव versus guilt. Initiative versus guilt. Trust versus mistrust. Initiative versus guilt. इसमें होता है चाइल्डहुड पीरियड में. ठीक है, ये इन्फेंसी में होता है. So initiative versus guilt means, what is the meaning of initiative? In this period, the child usually take an initiative for anything, और अगर उसको उसके लिए प्रमोट किया जाए, इनकरेज किया जाता है, तो लेटर ऑन ऑल्सो द चाइल्ड डेवलप द फीलिंग ऑफ इनिशिएटिव. अदरवाइज चाइल्ड में गिल्ट की फीलिंग आ जाती है. यू नोटेड डाउन दीज स्टेजेस ऑल्सो इन योर कॉपी एज योर नोट्स. ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट. You might have observed some of the child who come into the period of early or the middle, so they do so many things by their own. वो चाहते हैं हर एक चीज़ें अपने से करना. But if the parents support them, no, you don't do, I am going to do it. So that create a kind of dependency also. The child is always dependent on you. उसमें एक independency नहीं आएगी. The child will never become independent child. Independent नहीं हो पाएगा. Is it clear? Erik Erikson, childhood socio-emotional development. Trust versus mistrust. Initiative versus guilt. ठीक है. Third is autonomy versus shame and doubt. Autonomy versus shame and doubt. Autonomy मतलब होता है कि अपने से चीज़ों को करना, तो versus shame and doubt. For example, it is again related to the initiative part. If the child want to do anything by their own, तो उसे करने देना चाहिए. तो उसमें एक ऑटोनॉमी की कंसेप्ट डेवलप होती है. अदरवाइज उसके में हमेशा एक शेम रहेगा कि, और डाउट में वो रहेगा. द होल लाइफ द चाइल्ड इज हैविंग द डिपेंडेंसी ऑन यू, ऑलवेज डिपेंड ऑन द पेरेंट्स फॉर ईच एंड एवरी डिसीजन. दे आर अनएबल टू मेक द डिसीजंस ऑफ देयर लाइफ,
and they always in the shame and doubt mean the conflicts, confusion, हमेशा एक confusion और एक conflict में रहते हैं. So these are the 3 stages. So 8 stages alliteration had given. I discuss with you the 3: trust versus mistrust, initiative versus guilt, autonomy versus shame and doubt. आगे बढ़ेंगे. Please you note down this one. Okay. I hope I can read out it. Okay. Next part is fourth. Fourth stage is industry versus inferiority. Industry versus inferiority. Okay. Identity versus identity confusion. Generativity versus stagnation. Integrity versus despair. So here I had done most of the things. One of the stages is missing, but leave it for now and write it down, these things. But all these stages do not cover the childhood period. Okay, it also cover the just say for example identity versus identity confusion. It come in the adolescence period. Then adulthood में generativity versus stagnation. Then old age में integrity versus despair. ठीक है. इंडस्ट्री वर्सेस इंफियरिटी ये चाइल्डहुड का ही होता है. चाइल्डहुड में ही बच्चे कुछ इंडस्ट्रियस काम करना चाहते हैं और इंडस्ट्री वर्सेस अदरवाइज उनमें if they are not promoted and they are not encouraged to do some creativity, to do some industrious work, to do some productive work, a kind of complex arrived in them which is known as inferiority. inferiority complex एक arrived हो जाता है उनमें पूरी लाइफ टाइम के लिए कि मैं जो भी करूँगा वो गलत ही करूँगा या मुझसे कभी भी कोई चीज़ सही नहीं होगा. तो एक inferiority complex उनमें arrived होता है. Is it clear? 4, 5, 6, 7. क्लियर. आगे बढ़े. सो चाइल्डहुड में सोशल इमोशनल डेवलपमेंट क्या होता है दैट वी हैव डिस्कस. नाउ द लास्ट एंड फाइनल डेवलपमेंट विच इज रिलेटेड टू द चाइल्डहुड पीरियड इज moral development. What about the moral development or how you can define the moral development? moral development को आप कैसे define करेंगे कि moral development क्या होता है? moral development means to choose between right and wrong. That is the meaning of moral development. Moral development is the rightness of anything. When you do anything right or wrong, so that is a moral development. So is it clear? Okay. Moral development may be one of the psychologists who has done the work. It is the Lawrence Kohlberg. Lawrence Kohlberg. Just like in the cognitive development, Jean Piaget name was there. Socio-emotional development, Erik Erikson. So similarly, moral development is Lawrence Kohlberg. He also have given some of the stages of the moral development. ठीक है, इन्होंने भी कुछ stages दिए हैं moral development के. Okay, is it clear? So वो stages आपको बहुत डिटेल में नहीं पढ़ने हैं.
बट द मॉरल डेवलपमेंट चाइल्डहुड में क्या होता है, वॉट इज़ द मॉरल डेवलपमेंट ड्यूरिंग द चाइल्डहुड, दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड. ठीक है, ये आपको समझना है. बेसिकली चाइल्डहुड में जो डिफरेंस आई जस्ट नाउ टोल्ड यू कि मॉरल डेवलपमेंट इज रिलेटेड टू द राइट और रॉन्ग, टू डिस्टिंग्विश बिटवीन व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग. सो इन द चाइल्डहुड द चाइल्ड डिस्टिंग्विश एनीथिंग, I am talking about the early childhood period. So they distinguish anything right or wrong on the basis of reward and punishment. This is a very important point, you should note it down. रिवॉर्ड और पनिशमेंट के बेसिस पे गलत और सही का जजमेंट करते हैं. जिस चीज़ के लिए उन्हें रिवॉर्ड मिलता है वो सोचते हैं कि ये काम बहुत अच्छा है, जिस चीज़ के लिए पनिशमेंट मिलती है उनको ये लगता है ये काम गलत है. बट स्लोली स्लोली वो जैसे बड़े होते हैं तो वो अपना ही एक मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट बनाते हैं. They make their own moral code of conduct. Okay? Okay, so we have discussed the childhood stage. Childhood stage हमने completely discuss कर लिया. Now the next stage which we have to discuss is adolescence. So everybody write down in your copy adolescence. कौन से स्टेज के बारे में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं? वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द एडोलसेंट स्टेज. एडोलसेंट स्टेज is a stage which is marked by 11 years to 16 years. 11 years to 16 years. We can consider that child is in the period of adolescence. एडोलसेंस की बात हो रही है. एडोलसेंस इज अ पीरियड फ्रॉम 11 to 16 years. दिस इज वन पॉइंट. एंड इट इज अ पीरियड विच कम बिटवीन द चाइल्डहुड एंड एडल्टहुड. सेकेंड पॉइंट, come between the childhood and adulthood. Adolescence is a period from 11 to 16 years and it is a period which comes between the childhood and adulthood. ये वो पीरियड होता है जो बाल अवस्था और ठीक है, इट इज़ इसकी हिंदी में हम कहते हैं, आपको हिंदी भी मालूम होनी चाहिए. एडोलसेंस को किशोर अवस्था कहते हैं. सो ये बाल अवस्था और एडल्टहुड मतलब ये दोनों पीरियड के बीच का पीरियड होता है. It is a period which is marked by tremendous change in the life of the child and in the whole cycle of the child. बच्चे की जो पूरी साइकिल होती है उसमें बहुत ही ट्रेमेंडस चेंज आता है. It is a period which bring about drastic change, not on the ground of physical but also psychological. So it is a period which is found to be very delicate and we have to handle it very sensitively. Okay, so let's discuss about the different kind of development which take place during adolescence. So it is clear to you all. 2 points 11 to 16 come between childhood and adulthood. Okay, now write down the next point. ड्रास्टिक चेंज होता है इस समय. ड्रास्टिक चेंज का मतलब आप समझ रहे हो? ड्रास्टिक चेंज मीन्स you can imagine a child who is in the period of late childhood, means around the 11 year. Okay, I told you all that childhood period begin from 2 to 11 year. 2 से लेके 11 साल तक के बच्चे जो होते हैं वो चाइल्डहुड होते हैं. 11 साल के बाद जो बच्चे हैं वो एडोलसेंस में आते हैं. बहुत से फिजिकल चेंजेस आते हैं,
हार्मोनल चेंजेस आते हैं विच ब्रिंग अ चेंज इन देयर बिहेवियर ऑल्सो, जो उनके बिहेवियर में भी चेंज लाता है। ठीक है, चलो ये पॉइंट लिख लिया, टेक अ स्क्रीनशॉट एंड गोइंग टू डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट पॉइंट। So now we should talk about the physical development. इसी तरह similarly you all have to discuss about different kinds of development. Physical development, cognitive development, socio-emotional development. ठीक है, ये सारे हमें डिस्कस करने होंगे। फिजिकल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, सोशियो-इमोशनल डेवलपमेंट, moral development, some of the major concern of the adolescents. Adolescents में होते हैं तो कुछ major concerns भी होते हैं, उसे भी हमें डिस्कस करना होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। फिजिकल डेवलपमेंट की बात करें तो ट्रेमेंडस इंक्रीज इन दी हाइट एंड वेट बोथ इन बॉयज एंड गर्ल्स. And there are so many physical growth also. The pattern is different from the boys and girls. Okay. So what are the points? So क्या development? So rapid increase in height and वेट. रैपिड इंक्रीज होता है हाइट और वेट में. हेयर ग्रोथ होता है इन एवरी पार्ट्स ऑफ द बॉडी. ओके, गर्ल्स में प्यूबर्टी बिगिंस इन गर्ल्स. menstruation period started, puberty begin हो जाती है गर्ल्स में. हेयर ग्रोथ हो जाता है. The boys used to have the beard and mustache. Okay, their voice also become heavy. Okay, their vocal cord पे changes आते हैं. There is a change came in the vocal cord. So these are the things which are related to the physical development. हाइट में ये देखा जाता है कि द गर्ल्स हाइट इंक्रीज अप टू देयर प्यूबर्टी, अप टू देयर मेंस्ट्रुएशन पीरियड. आफ्टर दैट इट विल नॉट बी एबल, बट बॉयज आर एबल टू इंक्रीज इन देयर हाइट. ओके, देन दीज आर द थिंग्स. एंड change in the voice. Boys में shoulder will become broadened. Okay, girls the chest development. So ये सारे कुछ physical development होने लगते हैं as the child come into the adolescence period. So in this time they need to be very sensitive. The people need to be very sensitive toward them because the child themselves are in some of the conflicts and chaos about their own body and physical structure. They don't know what is happening to them. So in that situation, if they doesn't get any kind of support, so somewhere it make their life and psychologically make them ill also. Anything can be happen. So basically is in this time period the emotional and psychological support play a greater role. There should be anyone at their home which support the child. It's very important. Okay. Okay. Oh, so sorry. I have written the date wrong. At that time also I have written the date wrong. So date should be 4. Okay. Please don't mind this mistake. Today is 4. And earlier also you will make a correction. Okay, so here in this video children I completed my concern about the physical development during adolescence.
So in this video, I had discussed with you childhood, social emotional development and moral development, and the adolescence physical development. इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. So we are about to complete this chapter in 1 or 2 videos. Okay, thank you so much children, and one more thing, if you have any doubt you can ask to me in the classroom. Okay, thank you so much.